Hi friends, welcome to English Study Point. Today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a literary phrase that is Discordia Concors. This particular phrase was used in the context to describe about metaphysical poets' style of forming or creating their poetry. Now, it is very important for you to know that more than just a phrase, it is a kind of style that was adopted by many metaphysical poets. And metaphysical poets, while using Discordia Concourse as a style in their poetry, they try to present two or more kinds of dissimilar words in a sentence in order to achieve the effect of harmony. So they think that, or metaphysical poets are of the view that if so ever they are trying to present two or more kinds of dissimilar ideas in a sentence, so in a way they are able to explore the multi possibilities as well as multiplicities. And also let me simplify this phrase a bit easier for you all. So it is a kind of phrase in which metaphysical poets try to yoke or combine or blend two or more kind of opposite words as well as ideas that logically contradicts with each other. So this is called as Discordia Concourse. And why metaphysical poets try to use this style in their poetry? Because they want to achieve some kind of unity as well as harmony by combining disparate or conflicting elements in a sentence. That is why this phrase was used by many metaphysical poets as a style. And also they also emphasize upon the point that they want to showcase various kinds of unity in multiplicities as well as various kinds of ways by blending opposite ideas as well as words in a same sentence. They think that they are able to emerge harmony if they use or blend opposite ideas in a same sentence. So this is the major use of such kind of style. And this kind of style was mainly useful for metaphysical poets because they want to showcase their intellectuality to the audience. They think that they are more intelligent and no one is like them, so they are trying to present very dissimilar. They are trying to showcase us comparisons between so many dissimilar things in order to make reader realize their potential, how much intelligent they are. Now let us understand this phrase in a more elaborative way. So it is a kind of Latin phrase which means discord in harmony. तो यहाँ पर डिस्कॉर्ड इन हारमनी का मतलब क्या है कि मेटाफिजिकल पोइट्स इस टाइप की स्टाइल का यूज़ करके, ये फ्रेज़ होने से ज़्यादा एक तरीके की स्टाइल है जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स इस स्टाइल को अडॉप्ट किया करते थे अपनी पोइट्री के सेंटेंसेस को फॉर्म करते समय, जिसमें वो दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स या फिर आइडियाज़ ऐसे शोकेस करने की कोशिश करते थे जो कि बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हुआ करते थे। एंड वो डिफरेंट आइडियाज़ को सेम ही सेंटेंस के साथ शो करके एक तरीके की हारमनी या फिर यूनिटी को अचीव करना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम डिफरेंट आइडियाज़ को, डिसिमिलर वर्ड्स को एक ही सेंटेंस के अंदर कंबाइन कर देंगे तो इससे एक तरीके की यूनिटी अचीव होगी, एक तरीके की हारमनी क्रिएट होगी, एंड जिससे हम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे एक सेम सेंटेंस के थ्रू। मेनली मेटाफिजिकल पोइट्स इस टाइप की फ्रेज़ या फिर स्टाइल को इसलिए अपने वर्क्स में यूज़ करते थे क्योंकि उन्हें अपनी मेन इंटेलेक्चुअलिटी को शोकेस करना होता था रीडर्स के सामने, एंड अपनी इंटेलेक्चुअल जो उनकी इंटेलिजेंस थी उन्हें ज़्यादा शोकेस करना चाहते थे ऑडियंस के सामने। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम इस टाइप की पोइट्रीज़ को क्रिएट करेंगे जिसमें डिसिमिलर आइडियाज़ की प्रेजेंस हो तो इससे क्या होगा, एक यूनिकनेस क्रिएट होकर आएगी जिससे बाकी सारे लोग हमें यानी मेटाफिजिकल पोइट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि ये कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे। सो डिस्कॉर्ड इन हारमनी का मतलब ये है कि डिसिमिलर इमेजेस को दिखाना सेम सेंटेंस के अंदर, जिसके थ्रू डिसिमिलर
इमेजेस को ही दिखा करके एक तरीके की हारमनी को अचीव करना. Now, this term was coined by 18th century English writer Samuel Johnson. Please remember this, to describe a combination of dissimilar images. Yes, इसके थ्रू इस फ्रेज़ या फिर ये एक तरीके की स्टाइल है, फ्रेज़ होने से पहले ये एक तरीके की स्टाइल है जिसके थ्रू डिसिमिलर यानी ऐसी इमेजेस जो कि बिल्कुल एक दूसरे से ना मिलती जुलती हो, उन्हें इन सभी इमेजेस को कंबाइन करके ये अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को शोकेस करना चाहते थे मेटाफिजिकल पोएट्स. सो टू डिस्क्राइब अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस और डिस्कवरी ऑफ ऑकल्ट रिजेम्बलेंसेस. ऑकल्ट यानी कि ओकल्ट बहुत ज़्यादा जो कोई चीज़ मिस्टीरियस होती हो यानी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी होती हो. रिजेम्बलेंसेस का मतलब है यहाँ पर जो चीज़ सिमिलर हो, यानी मिस्टीरियस रिजेम्बलेंसेस का यहाँ पर मतलब है जिनकी मिस्ट्री वाली चीज़ों से सिमिलैरिटी हो. रिजेम्बलेंसेस का मतलब ही सिमिलैरिटी होता है. और डिस्कवरी ऑफ ऑकल्ट रिजेम्बलेंसेस इन थिंग्स अपेरेंटली अनलाइक, यानी ये इस स्टाइल का यूज़ करके मेटाफिज़िकल पोइट्स इस तरीके की स्टाइल का यूज़ करके वो रहस्य वाली चीज़ों को जो एक दूसरे से ना मिलती जुलती हो उन्हें डिस्कवर करना चाहते थे. जैसे कि जॉन डन ने इस टाइप की स्टाइल का बहुत बार अपनी पोएट्रीज़ में यूज़ किया है. जैसे कि उन्होंने सन को सर्वेंट से कंपेयर किया है एंड उन्होंने अपने और अपनी बिलवड के यूनियन को कंपास से कंपेयर किया है. सो ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं डिस्कॉर्डिया कॉनकॉर्स स्टाइल के. देन Johnson created the expression by reversing a phrase by the Latin poet whose name is Horace. तो सैमुअल जॉनसन ने इस पर्टिकुलर फ्रेज़ को कॉइन किया है, बट उन्हें इस पर्टिकुलर फ्रेज़ को कॉइन करने का आइडिया कहाँ से आया? उन्होंने लैटिन पोएट हॉरेस की फ्रेज़ को रिवर्स किया था. कॉनकॉर्स डिस्कॉर्डिया को रिवर्स करके सैमुअल जॉनसन ने डिस्कॉर्डिया कॉनकॉर्स इस पर्टिकुलर फ्रेज़ का नाम रखा, जिसके थ्रू वो मेटाफिज़िकल पोइट्स की करेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करना चाहते थे. देन the metaphysical poetry of John Donne, Richard Crashaw, Abraham Cowley, George Herbert and Edward Taylor, their works contains examples of Discordia Concors. तो ये सारे पोइट्स हैं जो कि मेटाफिज़िकल पोइट्री के उसमें आते हैं. इन्हें क्लब किया जाता है, एक ही नाम से इन्हें टाइटल दिया गया है कि ये सारे मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं, जिनमें से जॉन डन, रिचर्ड क्रॉशो, अब्राहम कॉले, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एडवर्ड टेलर का नाम आता है. इनके वर्क्स में हम देखते हैं एग्जाम्पल्स डिस्कॉर्डिया कॉनकॉर्स के. देन इन डन्स आ वैलेडिक्शन टू फॉरबिडिंग मोर्निंग, जिसमें ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्कॉर्डिया कॉनकॉर्स का, जिसमें पोएट कंपेयर कर रहे हैं अपने और अपनी लवर के यूनियन को, यानी बिलवड के यूनियन को कंपास से. सो लेट मी डिस्क्राइब दिस स्टेंजा इन अ मोर इलेबोरेटिव वे टू यू. सो इफ़ दे बी टू, they are two so. As stiff twin compasses are two, thy soul the fixed foot makes no show to move, but doth if the other do. And thought it in the centre sit, yet when the other dart doth roam, it leans and hearkens after it, and grows erect as that comes home. Such will thou be to me, who must like the other foot obliquely run. The firmness makes my circle just, and makes me end where I begin. So here in these lines, John Donne is trying to describe about himself as well as his lover. So their love is pure and their love is compared to spiritual love, because he is trying to say in his poetry that and also he is presenting us examples of discordia concors by saying that there are two ends in a compass. So here you can see that there are two ends in a compass, and at one end there is a fixed foot which is his beloved. He tried to associate fixed foot of this compass to his beloved, and the other foot that is moving round the circle to himself.
So there are 2 foot in the compass. Fixed foot he compares to his beloved, and the foot which is moving and forming a circle he is comparing to himself. And also he is trying to highlight that his beloved make no show to move until the other foot does. She is completely faithful. Means here he is trying to showcase us that his wife beloved is so pure to him, or so loyal to him, that she doesn't even move a step uh, before considering him. Means John Donne here. So she never make or try to move a step further until and unless John Donne moves. So this is how which showcase their purity of love. And she is completely faithful to him and supports him in whatever he does. So here these lines are: and thou it in the center sit, and when the other doth roam, it leans and hearkens after it, and grows erect as that comes home. So these lines also justifies that her beloved love, as well as his love to his beloved, is so pure, that his beloved is so faithful to him that she supports him anywhere and whatever he does, and she never even run a step further before considering him. And also done emphasizing his wives need to stay at home and dependent on him for everything. So these lines suggest that Dunn's wife, that is Anne, is dependent upon him in each and everything, and she doesn't take a step without considering him. There are these lines: such will thou be to me, who must like the other foot obliquely run. Thy firmness makes my circle just, and makes me end where I begin. So here he is trying to showcase us that their love is so firm that it cannot be shaken by anyone interfering in between their love. And also he is trying to showcase that this firmness, this unity of their love, makes them complete or complete their circle. And also he is trying to showcase that by his lover, that is Anne, he is a complete man, and he is able to complete his circle with the support of her beloved, of his beloved. So here with this particular video lecture ends here, and hope this lecture will help you in your UGC NET English literature exams.